dear friends, welcome to Padhai Se Dosti YouTube channel. In previous video session, we have already started a discussion about Indian Navy. So we had discussed about the history of Indian Navy, the historical background, how Indian Navy originated, okay, or what the traces we found in history related to the naval forces which belongs to India that we discussed. We discussed about the medieval era of Indian Navy, that is Chhatrapati Shivaji Maharaj Indian Navy, or the armor he established. Okay, we discuss about the Kanoji Angre, the able commander of Chhatrapati Shivaji Maharaj, who keep check on English, Dutch, and Portuguese Navy at that time. Okay, and then we discuss about the modern Indian Navy. And how this Indian Navy grew rapidly after independence, and today how it is one of the strongest navy in the world. Okay, so after that we discuss about the different operations of the Indian Navy, the offensive and defensive operations, then diplomatic role, constabulary role, and the command and control of Indian Navy. We discuss about different naval commands which are operational in day to day life, or we can say in recent time. So it is a Western Naval Command, Eastern Naval Command, and Southern Naval Command. We discuss their respective headquarters, and also we discuss about the Tri Service Command, which is located at Andaman and Nicobar Islands. Now let's discuss about different ships in the service of Indian Navy. Okay, so how these ships they are important for Indian Navy, what are the role they perform during the combat operation or during the peacetime also, and what are the peculiarities and characteristic significance of these different Indian naval ships. So let's discuss. Very first is aircraft carrier, a massive ship. An aircraft carrier is a warship with a full length flight deck and facilities for carrying, arming, deploying, and recovering aircraft, acting as a sea going airbase. ओके, वो चलता फिरता एक एयरबेस होता है जो कि समुंदर में तैरता हुआ ऐसा नजर आता है. This is a satellite picture or the aerial picture, you can say, of this particular aircraft carrier. It has a long runway like this, you can able to see over here, where the fighter aircraft can land or can take off from this particular space. Okay, so it is a very costly, very high end technology required to construct this particular aircraft carrier. So we have two aircraft carrier. Previously we have two, but right now we have only one because we have retired one from them. Okay, INS Vikrant and INS Virat. So nowadays, India is also constructing its own aircraft carrier indigenously. Just remember this thing. Then we have destroyers. Destroyer is a fast, heavily armed, maneuvering, maneuverable yet long endurance warship. It is designed to escort large vessel in a fleet like an aircraft carrier, troops carrier, supply ship, or merchant ship, forming a part of a convoy or battle group, and defends them against smaller powerful or short range attackers. Okay, they are also capable to carry out anti submarines, anti air, anti surface operation. A guided missile destroyer is a destroyer designed to launch guided missile on enemy ships and coastal defenses in support of amphibious operations. Okay, so there are many new terms. Let's discuss one by one what is destroyer and what is its defense significance. Okay, so it is a fast, heavily armed, maneuverable yet long endurance warship. So what this means? Fast. It is fast compared to the aircraft carrier, as it is a very big ship. Its movement is comparatively slow. Okay, but this is a comparatively small than this warship, so it will move very fastly. Heavily armed. It has all type of machine guns. It has torpedoes, different missile system, radar system, different jammers. Okay, different cannons. So all these things available on this destroyer. It can heavily damage enemy's warship. Okay, or any other enemy property. Okay, so it is a long endurance warship. It is designed to escort लार्ज वेसल्स इन अ फ्लीट लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर, ट्रूप्स कैरियर, सप्लाई शिप. तो देखो, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर रहा है, कोई ट्रूप्स कैरियर मतलब कोई सैनिक हम भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके ऊपर एनिमी अटैक ना कर दे उनके शिप के ऊपर, तो उनको सेवा देने के लिए, उनको रक्षा प्रोवाइड करने के लिए भी इस तरह के डिस्ट्रॉयर काम करते हैं. उसके बाद कोई मर्चेंट शिप है which carries very highly economic goods. Okay,
जो भी मौल्यवान सामान वो कैरी कर रहा है कोई मर्चेंट शिप, तो उसको उसको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए भी ये काम करता है। सो ये एक कन्वॉय की तरह काम करता है। हम देखते हैं, देखो कोई पीएम की या सीएम की जब सवारी निकलती है तो उसके आगे पीछे कैसे बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ रहती है। सो जो कॉस्टली गाड़ी होती है वो सीएम की होती है, बुलेट प्रूफ वगैरह पूरी अच्छे से बनाई हुई होती है। लेकिन ये जो पुलिस की गाड़ी होती है वो कैसी होती है? इट इज़ अ स्टर्डी व्हीकल विच जस्ट दे जस्ट वांट टू protect the main asset. Okay, so likewise this destroyed, they are the sturdy, long durable, long endurance vehicles, heavily armed. Okay, so remember these things. So they used to defend against smaller powerful and short range attackers. तो कोई भी अटैकर आता है तो उसको डिफेंड करने का काम ये करते हैं. They are also capable to carry out anti submarine, anti air and anti surface operations. So what is anti submarine? कोई जमीन के सॉरी कोई समुंदर के पानी के नीचे से सबमरीन कोई अटैक करने वाली, सपोज इस शिप के ऊपर कोई टॉर्पेडो लॉन्च करती है, तो इसके पास ऐसी यंत्रणा होती है कि वो पानी के नीचे भी सर्विलेंस कर सकती है। और अगर कोई टॉर्पेडो या कोई सबमरीन उसे नीचे दिखाई देती है तो पानी के अंदर भी उसको जाके डिस्ट्रॉय कर सकती है, ऐसे मिसाइल्स वो दाग सकती है, या ऐसे कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म उसमें प्रेजेंट होता है। सो एंटी सबमरीन मैकेनिज्म, एंटी एयर, सपोज इफ देर इज एनिमी हेलीकॉप्टर और एनिमी फाइटर जेट which is attacking on this destroyer, then there is a anti-aircraft gun also which is fitted on this particular destroyer, so it can operate as a anti-air operations. Then anti-surface, if there is any coastline of any enemy's country and if you want to destroy that coastline, that surface, then it can take part in anti-surface operations also. A guided missile destroyer is a destroyer designed with launch guided missile. So what is a guided missile? They have a mechanism so that they will hit the target perfectly. You just have to assign the लोकेशन, सपोज एक कोई टारगेट है, उस आपने उसको असाइन कर दिया कि इस टारगेट को आपको हिट करना है, वो टारगेट मूव भी होता है, फिर भी उस टारगेट का पीछा करके वो जो मिसाइल है उस टारगेट को हिट करता है, उसे हम गाइडेड मिसाइल बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस बालाकोट एयर स्ट्राइक, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, दे यूज द लेजर गाइडेड मिसाइल। आपने वो बहुत बार उसके फुटेज भी देखे होंगे, देखो कि किस तरह से वो वहां पे जाके हिट करते हैं। सो इफ वंस यू गिव the location, if you once set the location, you don't have to look after it, it is just fire and forget type of missile. Okay, आप जस्ट फायर करो और भूल जाओ, वो जाके हिट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसमें ऐसा मैकेनिज्म है कि सपोज कोई एक मैंने टारगेट को असाइन कर दिया, तो उस टारगेट का लोकेशन फिलहाल क्या है, उसका टेम्परेचर और उसकी कुछ स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि रिमोट सेंसिंग में यूज की जाती है। तो उसको एक बार उसने लॉक कर लिया तो वो कैरेक्टरिस्टिक वाला ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव भी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसे वो फॉलो करता है। इट फॉलोज दैट स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टारगेट एंड हिट, and that particular missile hit that target. So that is a very enhanced capacity of this destroyer, that it has a guided missile. Okay, so it defend the enemy ships, the coastal defenses in support of the amphibious operation. What is an amphibious operation? कोई ऑपरेशन ऐसी भी होती है कि जो पानी और जमीन दोनों के दोनों तरह करने पड़ते हैं। लाइक सपोज इफ देर इज एनी टेररिस्ट अटैक, सपोज दे केम फ्रॉम सी, they landed on the coast and they just attacking on the different facilities available on the coast, then Indian Navy have to take amphibious operation, like they have to operate in water also and on land also. तो कुछ ऐसे भी ऑपरेशन होते हैं जिसे एम्फीबियस ऑपरेशंस बोला जाता है। आई होप द रोल ऑफ डिस्ट्रॉयर इट इज क्लियर टू यू। देन वी हैव फ्रिगेट। It is a warship smaller in size than destroyer. It is armed with guided missile and also used as a escort for aircraft carrier. It is also used for a shore बम्बार्डमेंट एंड अदर कॉम्बैक्ट फंक्शंस। ओके, सो इस तरह का होता है ये, देखो थोड़ा सा डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है लेकिन एक अच्छा खासा वो भी वॉरहेड कैरी करता है जिसमें मिसाइल्स गन्स वगैरह डिप्लॉय होते हैं। एक कन्वॉय में ये भी शामिल होता है किसी बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ। देन वी हैव कोवर्ट और कॉर्वेट, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है। इट इज़ अ फास्ट हाईली आर्म वॉरशिप which is smaller than frigate and larger than coastal petrol vessel, often armed with anti submarine operations. So जो भी anti submarine operations होते हैं, submarines means remember under, which is submerged. Submarines word, just remember this word submarine, which is under the water, which is submerged in the water, so that is a submarine. Okay, so it is capable to armed with anti submarine operations. Okay,
Then we have the mine, mine counter measure vessel. ओके, MCV बोलते हैं, माइन काउंटर मेजर वेसल। जैसे एंटी टैंक बॉम्ब होते हैं, देखो आपने वो बॉर्डर मूवी देखी होगी, उसमें टैंक को उड़ाने वाले वो एंटी टैंक सुरंग होते हैं। तो वैसे ही एंटी एंटी सबमरीन वेसल माइन बिछाई जाती है समुंदर के नीचे, ताकि जो भी शिप वहां से गुजरता है तो उसको वो उड़ा सके। तो इस तरह की जो माइंस होती है, सी माइंस, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये माइन काउंटर मेजर वेसल करता है, ऑल्सो नोन एज अ माइन स्वीपर, इज अ स्मॉल नेवल वॉरशिप डिजाइन टू काउंटर द थ्रेट पोज बाय नेवल माइंस। माइन स्वीपर कीप्स वाटरवे क्लियर फॉर शिपिंग। तो ऐसे कई किसी एनिमी ने कई वो माइन स्वीप कर रखी है किसी ओशन पार्ट में, और वहां से हमारे व्यापारी जहाज या जंगी जहाज जाने वाले हैं, तो ये माइन स्वीपर सबसे आगे रहता है। ये इंश्योर करता है कि वहाँ पे कोई माइन नहीं बिछाई हुई हो किसी एनिमी ने। सो इफ इट इज देयर देन ही विल डिस्ट्रॉय दैट माइन, सो दैट passage or that waterway it is safe for the shipping. Okay, so remember this thing. Then landing ship, it is a naval vessel which is used to transport large number of vehicles, cargo, troops directly टू द शोर वेयर देयर इज नो पोर्ट फैसिलिटीज। देखो कोई शोर ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट्स नहीं होते, तो वहाँ पे अगर हमने सपोज कोई भेज भी दिया चीजें, तो उसको वहाँ पे लैंड कैसे करोगे, वहाँ पे पोर्ट ही नहीं है, वहाँ पे शैलो वाटर है। और आपको पता है जब शैलो वाटर होता है तो वहाँ पे शिप जा ही नहीं पाता, बड़ा शिप होगा तो वहाँ पे जा ही नहीं पाएगा। तो एक फ्लैट बेस वाला एक शिप होता है इस तरह का, इसे एक लैंडिंग शिप बोलते हैं। तो इसके ऊपर कुछ ऐसी फैसिलिटीज होती है कि जो जो भी इसके ऊपर सामान है, कुछ सपोज फोर व्हीलर इसके ऊपर आर्मी के ट्रक्स है, तो वो ट्रक्स को वहाँ पे कैसे उतारना है, तो वैसा मैकेनिज्म ये लैंडिंग शिप में उन्होंने बनाया होता है। कुछ पुल जैसा होता है, वो कंटेनर के पीछे आपने देखा होगा बहुत बार, एक बड़ा सा एक फ्लैप निकल के आता है जो कि कंटेनर में से बड़ी गाड़ियाँ नीचे उतारता है। तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म इसमें होता है। सो इट इज़ अ बेसिकली लैंडिंग शिप विच कैरीज द transport of vehicle, cargo and troops. Okay, then we have petrol vessels. They keep watch near the coastline, and majorly used by the coast guard. So this is a petrol vessel. They are small vessels which are used for patrolling the coastal areas. Then we have submarines like this. Here you can able to see the submarine. A submarine is a watercraft capable of operating autonomously underwater. Submarines are capable of approaching enemy ships undetected and destroy them by launching torpedoes or missiles while remaining submerged under the surface of the sea. मतलब समुंदर की सतह के नीचे रहते हुए भी समुंदर के सतह के ऊपर कोई भी एनिमी का शिप जा रहा है, कोई भी एनिमी का वॉरहेड वहां से मूव हो रहा है, तो उसको डिस्ट्रॉय करके, उसको आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम ये सबमरीन करता है। ये पानी के नीचे बहुत गहराई तक जा सकता है, कई महीनों तक के नीचे रह सकता है। ओके, तो शत्रु को पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारे नजदीक आ चुका है या दूर जा चुका है। इसलिए एंटी सबमरीन ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और कुछ स्टेल्थ एंटी सबमरीन्स भी है, मतलब वो बहुत कम नॉइज प्रोड्यूस करती है, वो बहुत कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, ताकि शत्रु का जो रडार होता है, सोनार सिस्टम जो होती है शत्रु की, वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाती कि यहाँ पे सबमरीन है। तो इसलिए एंटी सबमरीन जो ऑपरेशन होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं। इंडिया के पास कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट भी है कि जो एंटी सबमरीन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और कुछ ऐसे सबमरीन्स भी है जो कि हाईली डेवलप्ड है, न्यूक्लियर आर्म्ड कैपेबल है, और बहुत कम साउंड वो प्रोड्यूस करती है। सो इट इज़ अ वेरी गुड, it also have very good stealth capability, so remember this thing. So it is a submarine you can see over here, and it has a very important compact role. Then we have auxiliary ship. Auxiliary ship is a naval ship which is designed to operate in any number of roles supporting combat ships and other naval operations. So कोई भी ऐसा miscellaneous operation है, छोटे मोटे काम है, या कुछ भी सप्लाई चेन के कुछ इश्यूज है, वो सॉर्ट आउट करने के लिए ऑक्सिलरी शिप होती है। इट इज़ अ नॉर्मल शिप एंड विच इज़ मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्पस। कोई जो उसका काम है उसके हिसाब से उसे मॉडिफाई किया जाता है। सो दैट इज ऑक्सिलरी शिप। देन रिसर्च वेसल, a research vessel is a ship designed and equipped to carry out research at a sea. So this is a INS Sindhu Sadhana, guys, very important research vessel which is owned by NIA, National Institute of Oceanography, NIO, not sorry, NIA, NIO, National Institute of Oceanography, located in Goa. So this is the INS Sindhu Sadhana. Whatever picture you are seeing over here, just put on YouTube INS Sindhu Sadhana. You will get a very informative video of NIO, National
इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है आईएनएस सिंधु साधना के ऊपर, कैसे ये रिसर्च वेसल समुंदर के अंदर तक जाके अलग अलग क्लाइमेटिक स्टडीज को अंजाम देता है। समुंदर की जो पानी की क्वालिटीज है अलग अलग, उसकी क्षारता है, उसका टेम्परेचर है, उसमें जो कुछ भी समुंदर के अंदर पाया जाता है, वो सब चीज़ों का एक साइंटिफिक रिसर्च करके बहुत सारे इनपुट वो हमारे इंडियन आर्मी नेवी और हमारा जो फोरकास्ट डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उनको वो बहुत सारा इनपुट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम कोई भी आपदा हो या कोई भी समुंदर से जुड़ी हुई समस्याओं से निपट सके। और कुछ ऐसे भी चीज़ें वो ढूंढ के निकालते हैं जैसे जिससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। सो रिमेंबर, रिसर्च वेसल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। INS सिंधु साधना, I have told you. Then we have training ships. It is used for training cadets and officers for war. तो इंडियन नेवल एकेडमी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू ट्रेन द नेवल कैडेट्स. ओके, then there is a national defense academy in Pune Khadakwasa also. There is also some small ships you can able to uh, watch in that Khadakwasla dam, which are giving training to these officers, cadets. Okay, so in this way Indian navy also has a different type of its own ships and its own warheads, and it has aircraft also which operates from land. Okay, so Indian Navy also has aircraft operating from land, helicopter, and patrol aircraft. Okay, so remember these few facts about Indian Navy. In this way, we have completed this chapter. If you have any doubt, do comment. I hope you really enjoy this particular session, which is very interesting to know about our Indian Army, Navy, and Air Force. Let's discuss some activities over here. Discuss the importance of Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island in the context of Indian Navy, and write the points below. So I want you solve this question. I will discuss here what are the different security aspect of these both islands for us, and you will do it on your own. We will just discuss over here. And the next question is about the contribution of Kanoji Angre in developing the Maratha Navy. Write the points below. Okay, so I will tell you few points over here. Let's discuss about this first activity. So if you consider this Andaman and Nicobar Island over here, so this island they are very close to the Strait of Malacca. ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना, इसके बहुत करीब है देखो. So it is also near to the this South China Sea. Okay, and China is already increasing its influence in the Indian Ocean region and in the South China Sea region, and it is always posing threat to all these Asian nation and also the international trade which is happening from this Indian Ocean region and from this Strait of Malacca. And that's why the presence of Indian Navy in this area, in this Strait of Malacca or in this particular Indian Ocean region, is very important to counter the threat of Chinese Navy in this region. So that's why this Indo-Pacific region, Indian Ocean and Pacific Ocean region, it is very important to have a peaceful international trade. And that's why many foreign countries like Europe, European countries, USA, Great Britain, France, and all the developed nations, they are giving very much important in this to this Indo-Pacific region. You might have heard about this Indo-Pacific region term in the news or in newspaper many a times. Okay, so Indian Navy has a strong presence over here. It has a tri service command over here. So if there is any threat to our economic zone which is lying in this Bay of Bengal, then Indian Navy will came into action. And if otherwise, if there is uh, a war between India and China also, then what we can do over here, हम जाके सीधा ये ट्रेड का जो पैसेज इसको ब्लॉक कर दे सकते हैं. तो चाइना का जितना भी ट्रेड यहाँ से होता है, ये गल्फ कंट्री के साथ जितना भी ऑयल चाइना इंपोर्ट करता है इन देशों में से, देखो यहाँ पे ये इराक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ से जितना भी ऑयल चाइना में जाता है इस रूट से, वो पूरा हम यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं. या चाइना का जितना भी ट्रेड होता है वो पूरा ब्लॉक कर सकते हैं. सो दैट्स वाई दिस इंडियन आर्मी का या इंडियन नेवी का, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का ये ट्राई सर्विस कमांड जो अंडमान निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है. सो दिस इज अ जोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अंडमान एंड निकोबार नेवी कमांड. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे आर्थिक जो हित संबंध है इस रीजन में उसके लिए, ये जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें जो व्यापार चलता है उसकी सुरक्षा के लिए, और चाइना का थ्रेट यहाँ से कम करने के लिए हम इस अंडमान निकोबार पोर्ट को काम में लाते हैं. ये मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करने के लिए अगर फ्यूचर में कभी वॉर होता है तो हम इसे ब्लॉक कर सकते हैं. तो ये पावर इंडिया को मिलती है यहाँ से. और ये अंडमान सॉरी ये लक्षद्वीप आइलैंड से यहाँ पे, और यहाँ पे
इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये जो अरेबियन सी है, तो इस अरेबियन सी में जो भी पायरेट्स होते हैं, जो भी पायरेट्स मतलब क्या है, सोमालियन पायरेट्स के बारे में आपने सुना होगा। सपोज़ यहाँ से कोई शिप गुज़र रही है इंडिया की इस तरह से और यहाँ पे आती है, तो ये पायरेट्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उनके फिरौती माँगते हैं। ऐसे किसी को किडनैप करते हैं, फिरौती माँगते हैं देखो गुंडे लोग, तो वैसे ये लोग करते हैं। इनके पास कुछ कमाने का ज़रिया है नहीं, वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, तो लोगों के पास अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी है नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, छोटी-छोटी शिप लेके बड़े शिप को घेरते हैं। एक कोई वेपन का उनको मतलब डर दिखा के उनके पास से पैसे निकालते हैं। कभी-कभी जो सेलर्स होते हैं उनको शूट आउट भी कर देते हैं ये लोग। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज होता है इस एरिया में। तो ये जो आइलैंड है, तो यहाँ से इंडियन नेवी ऑपरेट करती है इस पूरे रीजन में। यहाँ पे भी करती है, यहाँ पर भी करती है। ओके, तो इस पूरे रीजन में इंडियन नेवी की क्या बोलते हैं हम, गश्त चलती रहती है। तो एक इंडियन जो ट्रेड है उसको सिक्योर करने के लिए भी अंडमान लक्षद्वीप जो आइलैंड्स है इसका प्रेजेंस, वहाँ पे इंडियन नेवी का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। और हमारे सिक्योरिटी के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पे देखो इंडियन, यहाँ पे बहुत डेंस पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पे कोई एनिमी आता है तो ये पहले ही एक सिक्योरिटी का एक बैरियर हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस लक्षद्वीप आइलैंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, then discuss about the second question, role of Kanoji Angre to strengthen the navy of India, or the Hindavi Swaraj Chhatrapati's navy. So if you consider, there are many coastal forts over here: Vijayadurga, Padmadurga, Khanderi, Underi. Then we have Janjira. Then we have Ratnagiri, Sindhudurga forts over here. So there are many forts. Okay, so these all forts, they are either built by this Kanoji Angre or the Chhatrapati Shivaji Maharaj or some successor or preceding officers of this armor. Okay, so they have very strong control over here. They have safeguard the India's, or if you can say the Maharashtra's western coast from the foreign attackers almost for a 2 centuries. But after decline of Maratha Empire, this entire coast is goes in the hands of the British people. Okay, and that is the main role which is performed by Kanoji Angre. I hope you enjoyed this entire session, guys. Stay tuned with this particular session. If you enjoyed the session, do share with your friends so they will get benefited. And take care of yourself and your family during this pandemic period. So wish you happy learning. Have a great day. Thank you.